क्वेश्चन नंबर 280 अभी करते हैं। 280 उसके ही नीचे का। Calculate the maximum capital allowances available to LENA Limited for 6-month period ended 31st of March 2023. Whew. LENA Limited commenced trading on 1st October 22, registering for value-added tax form. From the same date, the company purchased the following vehicles during the 6-month period ended 31st of October 22 to 31st of March 23. Okay. Now purchased a new car, 64,000, including VAT of 9,000. The car has zero emission. It is used by managing director during the 6-month period ended 30. Managing director, and 60% of the mileage is for private use. Okay. Four new lorries AEA. इसके ऊपर तो चार्ज होगा. New car sales including VAT of 6,000. The car has CO2 emission of 30 grams per kilometer. It is used by sales director of 40% of the mileage for private journey. The full annual investment is available to LENA Limited. Okay. तो जहाँ पर मुझे लगता है आई डोंट थिंक इसके कार्स के ऊपर वैट आएगा क्योंकि फुल 100% यूज नहीं किए गए हैं. न्यू कार्स इसके ऊपर वैट तो अवेल नहीं होगा. मैं लॉरी परचेज की थी उसके ऊपर वैट हो सकता है. So, 0.8 into 0.06 नहीं अभी 6/12 जो कि 6 महीने यूज करेंगे राइट. सो मेरे हिसाब से टोटल अलाउंसेस should come 83,9,560
Let's just check. 88,700. Alright, FI. Zero emission था ना इस बार पे। सेम मिस्टेक, कोई बात नहीं। Then why Mekong Limited would have been treated as not a resident in UK for the period of 1st of 13 to 31st of March 17, but a resident in UK from 1st of August 17 to 31st of March 23. All four Mekong Limited was incorporated overseas outside of UK on 1st of 2013. Thus, the only chance of Mekong Limited becoming a resident of UK was that other directors of Limited continued their board meetings, held their board meetings inside UK itself or had centrally managed from UK itself. From 1st of April 13 to 31st of March 17, all four Mekong Limited directors were based overseas, but their board meetings were held sorry, board meetings were held overseas. Acha. So as they were held overseas, Mekong Limited was treated as not a resident in the UK. However, from April 17 to 31st of March, four of Mekong Limited directors are based in UK, and during this period, their directors of and also during this period, the directors of Mekong held their meetings in UK itself. As the meetings were held in UK, it was treated as a UK resident, or it was centrally managed from UK. It was treated as a UK resident. सब इधर ये हुआ है, पढ़ लेना। क्या बोलते हैं, राहुल को क्या हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड। तेरा आवाज नहीं आ रहा है। एक मिनट, नहीं आ रहा क्या? अरे अब स्पीकर आया? पे लगा ना। अब आया, अब आया। या तो इससे ये इंक्लूडेशन Mekong has taxable total trade profits of 9,80,000. अच्छा, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। Calculate the maximum amount of group relief which Mekong can claim against its taxable total profits for the year ended 31st of March 2023. Question ही था। Mekong shares in various companies, all of which have made trading losses. The following is the information. तो नेम्स का पूरा लिस्ट year ended May 2023. तो इससे okay, year end है ये, तो proportionate करना पड़ेगा मोस्टली। से तो जो भी लास्ट कंपनी वो तो नहीं कर पाएगी, because that does not form a part of the 40% group. Total loss relief claim ना। From Games Limited, फिर आता है loss from Rampezi
what I understood from understanding Zambezi is that जो ईयर एंड है वो है 31 मार्च 2023। अकाउंटिंग पीरियड 2 मंथ ईयर एंड का आ रहा है 31 मई 2022 को 17,000, तो वो तो उसके अंदर ही आ रहा है। सो आई थिंक दैट 17,000 वी कैन टेक। अप्रैल अप्रैल मई का 2 महीनों का आ गया के बाद अभी हमें और 10 महीनों का चाहिए। आई थिंक यहाँ पे losses रीजनिंग दे देंगे और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्यों ऐसा है उस चीज के लिए, और ट्रेडिंग अकाउंटिंग पीरियड एक्सप्लेनेशन होंगे मोस्टली। ये देखो 22,600, 17,000, 89,000, 17,000, 89,000, इसका जीरो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही छोटा हो जाएगा वरना 4 मार्क के लिए इतना total claim that can be made is राहुल तेरी माँ तेरे एक एक करके सारे बच्चों को डांटती है ना, सच बता, सच बता, हर दिन ना थोड़ा थोड़ा हर बच्चे को डांटती है ना। मेरे को लगेगा था रे, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि एक को टारगेट कर रही होगी, एक को टारगेट नहीं, सबको इक्वली पड़ती है, वो अच्छा लगता है। नहीं 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 भाई, required to pay corporation tax by quarter। ये वाली कंपनी में ऐसा होता है कि 80% प्रॉफिट वो लोग लेके आते हैं, बाकी 20% लॉस जो मेरे हिसाब में रहता है। अच्छा अच्छा, मतलब 80% वो लोग खाते हैं तो 20% तू खाता है, ऐसा? नहीं नहीं, मैं कुछ खाता नहीं भाई, मेरे को मिलता ही नहीं खाने के लिए, क्या खाएगा। नहीं, डार्ट डार्ट की बात हो रही है। अच्छा वो तो पूरा 100% मेरा। अच्छा तेरा ही, अच्छा अच्छा फिर ठीक है। अच्छा, y is equal to the corporation tax so for sure prior to 31st of 2022 NILE Limited did not have any। इसी बात में मेरे को दो लाइन याद आई, खड़ा हूँ आज भी वही। इसी बात में मुझे भी एक चीज करने याद आई। नॉट on 1st of January 2021 NILE acquired 60% holding in Pond Limited। तो 21 को उसने एक नई सब्सिडरी में इन्वेस्ट मतलब किया 60%। सो बेसिकली ऑग्यूमेंटेड प्रॉफिट हम यहाँ पे ढूंढते हैं एज हमें तो नहीं कि एज नील एक्वायर्ड 60% शेयर होल्डिंग इन पॉन्ड लिमिटेड इट बिकेम अ 51% good company because of which now the augmented profits for the year end of 31st of March 23 and year end 31st of March 2023 should be more than 7,50,000 क्योंकि 15 लाख डिवाइड बाय 2 होता है गाइस। तो ऑग्यूमेंटेड प्रॉफिट्स के लिए हम डिविडेंड को भी कंसिडर करते हैं। अभी ईयर एंड पूछा है मार्च 23 22 का, हाँ मार्च 23 का पूछा है। सो ऐसे हम बोलेंगे कि इन दिस ईयर augmented profits was more than 7,50,000 in March 2023 also say more than 7,50,000। तो मैंने पूछा है कि 23 में क्यों है और 22 में क्यों नहीं है। सो इन मार्च 2022 क्यों है कि on 1st January 2021, NILE had acquired 60% shareholding in Pond Limited. So therefore, on year end 31st of March 21, NILE Limited, Pond Limited was not considered in the 51% group as a subsidiary should be for at least 1 year in the group. For the year end 31st of March 23, Pond Limited
was a subsidiary for the whole year end 31st of March 2022 with augmented profits more than 7,50,000. Previous year का भी 7,50,000 से ऊपर होना चाहिए. And in March 2023, the augmented profits are more than 7,50,000 या जो भी amount, thus leading to Bond Limited being thus leading to NILE Limited treated as a large company for the year end 23 but not for the year end 22. यार देखो पिछले साल इस ईयर एंड के लिए नाइल के पास कोई सब्सिडरी नहीं थी ऐसा हम अज्यूम करके चलेंगे क्योंकि पार्शियल सब्सिडरी और प्रोपोर्शनेट सब्सिडरीज आर नॉट अलाउड. whereas इस ईयर एंड 22 के लिए में थी और ऑब्वियसली 23 में थी, तो हमें प्रीवियस ईयर के ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स और फुल सब्सिडरी को कंसिडर करना होता है. फिर लास्ट में calculate the final quarterly installment payment which should be made by NILE Limited for the year ended 31st of March 23 and state when is the due date. So for the year end 31st of March 23, NILE Limited made quarterly payments in respect of its corporation tax with the first three installments payments for the year end totaling to 1,200. अच्छा 1,1,200. अच्छा हमें तो प्रॉफिट्स पे कैलकुलेट करना है. So profits is इसके ऊपर 19%. अरे हाँ सॉरी इस पर 19%. तो भी इसको हमें 4 हिस्सों में अगर बांटना है नहीं है पर हमने ऑलरेडी पे किया हुआ है ना 101,200 पे किया हुआ है पहले 3 इंस्टॉलमेंट्स में. तो अभी हमें इतना इस इंस्टॉलमेंट में पे करना है. ड्यू डेट इज 7th of the month, 10th of the month, 13th, 16th of the month. So 7th of the month मतलब देखना भी 7th of the starting में पकड़ना था ना. स्टार्ट हो रहेगा अप्रैल 22 में. वहां से 7 महीना अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7 नवंबर दिसंबर जैन 23 is the 10th. Jan Feb March April is the 13th. April May June July. So it should be 14th of July 23 if I'm not made any calculations. तो मैं करूँ क्या बुक पे एक बार कर देता हूँ. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 April May June July August September October November December Jan Feb March April May June July. हाँ 14th of July 2023. अमाउंट करेक्ट है 14th July 2023. That's it for today guys. एक बार पढ़ लेते हैं फिर भी पढ़ा आता है क्योंकि हमने थोड़ा ज्यादा और एक्सप्लेन किया था. इन्होंने शॉर्ट में रखा है. For the year ended 31st of March 22 and 2023, the profit threshold for establishing whether NILE Limited is a large company was 7,50,000 बराबर. The threshold was exceeded for the year ended 31st of March 23 and the year ended 31st of March 22 and the 23. However, for the year ended 31st of March 22, an exception applies because NILE was not a large company. For the year ended 31st of March 21, the company profits clearly less than the profit threshold of 15 lakh. तो अच्छा हाँ प्रीवियस ईयर. हाँ ये भी तो कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर में हाँ वही तो हमने बोला कि प्रीवियस ईयर में पॉन्ड लिमिटेड था नहीं. एंड बिकॉज पॉन्ड लिमिटेड था नहीं या हाफ ईयर के लिए था या 3 मंथ्स के लिए था तो हम कंसिडर नहीं करेंगे इन द 51% ग्रुप बिकॉज ऑफ विच इसका थ्रेशोल्ड लिमिट 15 लाख ही रहेगा एंड नॉट 7,50,000. और ये 15 लाख को एक्सीड कर नहीं रहा है. इधर 7,50,000 इधर भी 7,50,000 ही था लिमिट. ठीक है. So that's it for today guys. Thanks so much for watching and bye.